तो कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ लाइव वीडियो चेक करें। एक सेकंड। ओके, वी आर नाउ लाइव। परफेक्ट। Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Walaikum salam, sir. I'll just give you an introduction briefly, so then you can start with the session. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the second day of our virtual research camp, namely Virtual Voyage, Opening New Frontiers in Research. For the second day, we will be covering the methodology part of research, and our speaker is Dr. Zeeshan Baig, Assistant Professor and Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon and Medical Educationist. Thank you so much, sir, for your availability, and you may proceed with the session now. Thank you very much. Thanks for having me here on this platform. I have disabled the video. The reason being is that the internet consumes lots of data and we can't present comfortably. So I hope everyone can see the screen. So I'll go ahead from here. I can't hear you, so please write in the chat box that my voice is clear and the audio and video both are there. Yes, sir, you are audible. Okay, let's start then. So this is my very first slide, and as you can all see, this is explaining about SCORE Research Exchange, a very good platform. And we are here on the day 2. This is me. If you can follow the cursor, I'm Dr. Zeeshan Baig, and I was invited to deliver a talk on methodology of research. And if you can see this roadmap, I'm supposed to be here. So your first day was with Dr. Ibrar Umar, Basics of Medical Research for the Beginners. And my topic actually is very vast. So I'll try my best to summarize it as much as possible. These are my academic credentials. I'm currently working as assistant professor in oral and maxillofacial surgery. I have qualifications from Pakistan, Ireland, Germany. I've been there, worked for a little while. And this oral and maxillofacial surgery actually is a dentistry specialization in which you treat jaws, in which you basically treat the fractures of the jaws, the road traffic accident, interpersonal assaults, oral cancers, the cancer of the mouth, the cyst and tumors of the mouth. So we have a established ward in which we have not a very big ward, but just 20 bedded wards we have everywhere, wherever there is an oral and maxillofacial surgery unit. And then we also treat patients in local anesthesia. And my very other interests are research. And I've published lots of articles. I will show you a few of them.
And also recently I've done Masters in Health Professional Education. That also is kind of a research-based qualification as well, which helps in your medical education purposes and also the research purposes as well. So let's see the details of this presentation today. So as it is a webinar, at the end of the webinar, the participants will be able to first, that I'll try my best to make you understand what actually is research. So if you go from here, wherever you go, like among your class fellows, among your seniors or juniors, you might be able to define what is research. As I understand, all of you are from undergraduate research backgrounds or undergraduate students. So it's very important for you to at least define something. So we are going to discuss about what is research actually, then what are the research methodologies. I'll try my best to finish a little bit component of that. Then we have a second learning objective, that different research designs we are going to touch. Steps of research process, they are all interlinked. So I might be touching the steps of research process first. Then data collection and data analysis, I might not be able to cover them today. It's a very vast topic and the cognitive load might be a little more. And then some ethical considerations in research, but I'll try my best to make this webinar very useful for all of you. And this is about typing in the chat box. So I would request all of you to use the chat box, and what we will try to make it some interactive session. So whatever your comments are, your answers to my questions, please write in the chat box. Like if any definition, then write the name of that, title of that thing, and then write the definition of that. So use the chat box to the maximum. Okay, so starting from the very first thing, I would request you to give your input in this. What is knowledge? So I would request you to please use the chat box and write in the chat box, and I'll be reading your comments. So in your understanding, what is knowledge? Tufail Ahmed says ideas or something we know. Okay. Amara Bhatt says knowing the facts. Fawad Muhammad Khan says collecting data and understanding that data. Okay, very nice. So three people with three different ideas, with three different knowledge of the word knowledge. Information that you can use to bring up some results. Muhammad Adil. So it's information, according to Adil, it's an information that you can use to bring up some results. Okay, anyone else? Let's take the last comment if anyone can put a comment here. Knowing of and about a specific topic. Okay, facts or information. Tanzil says facts or information acquired through education. Aksa Farrukh, understanding of a particular subject. Okay, so you see, all of you people, I think more than 10 people have commented here, and everyone has kind of a different definition. So knowledge is actually, some people say that it's power, but it's not actually power. Some people think that knowledge is the power you have. We can agree with this. And in fact, all of you, whoever has written something, is right. I agree with that as well. But let's go and see what actually knowledge is. So follow the cursor and see in the center, there is a yellow mark, yellow color, and knowledge is there in the center. So when you have beliefs, you believe on something. I'm not talking about religious beliefs, but some general scientific beliefs maybe.
So scientific beliefs, educational beliefs, some social beliefs, you have those beliefs in your mind, and then some truths are there. Then there is an overlap of truth and beliefs. First overlap creates some work which is unjustified, and some are only true beliefs. There is no justification for them. In between, or the overlap of beliefs and truth, gives you knowledge. So what we can say is justified true belief is knowledge. Okay, why in this research webinar I am talking about knowledge? Because this yellow area is actually body of the knowledge, and research is finding that justification, this justified true belief. You have to work and find it. So when you find the true belief, this is called knowledge. And for that, research comes. And research will add up into this body of knowledge, finding that justification. So for that justification, we have to work hard. We have to find the justification. Otherwise, there is no benefit of that truth, and no benefit of that belief, ultimately no benefit of that knowledge. So you try to actually find that justification, and that justification is research. Okay. Now we have to fill these boxes. Tell me why this justification is important, why research is important in medical science. I'll try to be bilingual here, Urdu and English both, if it's okay with all of you. Okay, please write in the chat box. Give me 4 very good reasons that why should we do research being in medical science as a student, as a doctor, teacher, clinician, basic scientist. Research, why is research important? Okay, Maheen Zubair says to treat disease that were thought to be incurable. Okay, very nice, but that's only for the clinicians. If someone doesn't have a disease, will not do a research, will we? But that is very justified. One important thing, Maheen. Then Hassan Javed, to raise awareness. Okay. Minahil Binte Tariq, we can identify possible diagnosis of a disease. Okay. You all will be very good clinicians. To find new treatment options. Very nice. So if we have already some problems, so treatment, we will try to solve those problems. That was Hamda Aftab. Nabiha Sheikh says for evidence-backed procedures. Very good word, evidence-based procedures or evidence-based practices. Nabiha, good. Aksa Farrukh, medical field is vast subject and evolving every time. So we have to do research to keep this thing vital, that we have to keep it actually evolving. Samad Ali, understanding the way to understanding the why to a problem. What is the first step to solving said problem? Okay. Rizwan TK, expansion of knowledge about particular entity. Fawad Muhammad Khan, to give different medical professionals information regarding different disease cases that they may or may not encounter in their daily practice. To fill the gaps in existing medical. Okay, let's go back. Thank you very much, everyone. Ikra is left. वो भी पढ़ लेते हैं. For innovation, not sticking to old ways, the old scripts, looking to treatments, disease from a new perspective. Very good. Mostly doctors, they always think of disease. They always think of disease cure, or maybe the etiology, the reason of that disease. But now the things are changing very frequently. So let's see what I have concluded. First is advances. Everything is evolving, as someone said, that evolving. So yes, you're very right. We need advancement in medical science. What we are treating right now in 2024, we not used to treat the similar way in like 2014 or 2004.
So things have changed. It's an evolving science. Improves patient care and outcome. Definitely, we are concerned with our patients. All the patients, like physical health, mental health, everything, and patients' care and outcomes, and also for the healthcare providers as well. Provides evidence for clinical guidance. Someone said about evidence-based practices. Amazing. This is very, very important. We need evidences. We have to collect evidences. We have to present the evidences to make it a law, to make it a guideline. So for that, we need to follow certain steps, certain guidelines. But one person is getting infected by taking such sort of water every day. We need to collect evidence, report it in a proper way, and then take it to the authorities, and then they will make some guidelines. This is also research. Encourages critical thinking and lifelong learning. This is a very important point. Lifelong learner. We all have to open that window for us. We keep that window open for you. That learning, you have to learn every other day. And the first very important thing for learning is that you need to understand that you don't know. If you don't know, then you will be accepting something which is coming inside. And for a good researcher, you have to understand that I need to learn, I need to recreate, collect, recreate, and everything. So these are just my understandings, that why do we need why do we need research in medical science? So you can even increase it and modify it as per your understandings. So learning objective number one was that what this word objective is very important. If you have paper and pencil, that just note it down. Objective will, this word is the key of today's session. So what is a research methodology? We have done knowledge, we have done research. So beliefs, true, justified beliefs, and all that knowledge, body of knowledge, research, why it is important. Now, methodology. Tarika kar kya hai? How are we going to design a method? Everything has a methodology. So let's fill it up. Again, chat boxes, please. We have 61 participants right now. So chat box, the process of, please can you fill it up? Research methodology is the systematic and logical process of okay, no one is writing anything. I'll give you a hint, some data collection, maybe process of gathering information, maybe organizing. Okay, Tufail Ahmed. Obtaining a purposeful conclusion. Okay, so we need a conclusion. So it's a process to reach the conclusions, of process to organize something. How to go about your research. Okay, that can be a pathway. So research methodology is a roadmap, it's a pathway, it's a systematic and a logical process of how to do research, in simple words. Okay, let me solve this for you. First thing is planning. Let's plan our research today. Let's sit and plan something out. And जैसे लोग कहते हैं कि कोई प्लानिंग करो, आउटिंग करो, प्लानिंग करो, वी आर गोइंग टू विजिट गिलगित बल्तिस्तान, प्लान करो, कोई डेज सजेस्ट करो. Same is the research. Let's plan. Let's a group of like-minded people sit together and let's plan something. Then conducting. Okay, the biggest problem is that we plan a lot. Many people have written lots and lots of topic to do research on, but they never conduct the research. Time in Mila, the biggest excuse of Pakistan. They don't conduct it. So methodology is कि पहले planning, just sit and design how to do the planning, and then how will you conduct this? How will it happen? If you have plans to visit some Gilgit Baltistan or somewhere else, how will you visit them? You'll travel by air, by road, by train. Train is not possible. You'll stay. Where will you stay? How many days will you stay? What will happen to your college when you leave? All this is planning and conducting that. Then analyzing. So if you have plans, you have conducted, now write it down. Analyze.
do something about analysis. That's also methodology. Reporting. Now, here comes the biggest problem. We do planning. Lots of people have done lots of planning. They have conducted research. They have collected the data. They have lots of, many people call me and say that we have data of like 3 researchers, 5 researchers. They never report. If you have not reported, that is publish. Your day 3 will be about reporting. So if you have not reported anything, it's a waste. And the data is going to be old. Old data should not be published. This is not innovation. This is not research. This will not add up into body of knowledge. It's the same like you take lots of photographs from your mobile phone. You never convert that data, never store that data in your laptops. And once one fine day, your mobile stops working, someone snatches it, or somehow you lose the data. So you cannot review it. Same is reporting. You have to do the research, and research is never finished until unless it is reported. And you will learn, I think, something about reporting tomorrow. One more thing, it also involves choosing the appropriate type. So one important thing is that you have very good planning of research, conducting, analyzing, but later on somewhere you realize this, that this was not the appropriate type. You were trying to compare something, but you actually have not achieved that comparison. So this is research methodology. Now, I can't finish each and every LO today, but I'll try my best to keep it uh, on one single path. I would try to teach you or discuss with you 4 main things. So I again request that please keep your chat boxes active. The first thing first is, as a student, first year, second year, third year, postgrad, you have to define your area of interest. It's very easy for a postgrad student to define his area of interest. Like someone is doing his post-graduation in general surgery, he knows that his area of interest is general surgery. That's why he's doing general surgery. If some student is in gynae, he knows his area of interest is gynae. He himself will never be interested in histopathology or pharmacology or even general surgery or medicine. So your area of interest is defined. As a final year, or as an undergrad student, you have to actually bring your mind towards your area of interest. So let's see that what is your area of interest. Area of interest can be broader, but not that broader that you will lose your interest in it. Your area can be the subject which you are studying or with the subject which you have already done. So for example, in pharmacology, someone has area of interest is use of analgesics. In pathology, someone has area of interest that neoplasias or necrosis. That's one. Pathology is a broader term, so you have to narrow it down and define your area of interest. Okay, so, and maybe you can also, area of interest can be outside those subject. Like maybe the students are thinking that burnout among students, difficulties of understanding a particular subject, maybe why students struggle to understand pharmacology, maybe why anatomy is considered one of the difficult subject, why someone is very good in anatomy. So lots of things are there for area of interest. So let's check that what area of interest you have. So give me ideas. Whatever you like. I don't know from which year you are. Maybe someone is in postgrad, someone is just joined a medical college. So you can just write down, and this is the first step towards your research. Define your area of interest. So Amara Bhatt says assessment in undergraduate medical students like MCQs, SEQs. She's interested in checking the assessments like OSCE. Can you ask something in OSCE which you cannot ask in MCQs? That's her area of interest, is assessment in undergraduate. Reason being I'm a postgrad. Okay, so she's a postgrad person, so that's why she is very defined in her interests. Okay, undergrad people. Depression among the medical students. Very nice. Please, Aisha, Asim, if you could please write it down in some paper, and then we are going to discuss it from you. Aisha.
We'll ask you something about it. Okay, so we have Tufail Ahmed, nanopharmaceuticals, very interesting. So nanopharmaceuticals, we have Ikra Nawaz, imposter syndrome in medical syndrome, medical students, I think. Ikra, yeah, very nice, interesting. See, so much interesting topics are coming. So very first thing which we do is take a paper or a pencil or take out your laptop, start your MS Word and write what is your area of interest. And you will never participate in a research which you are not interested in. That's also a very important thing. Any more ideas, people? Area of interest. Okay, so how AI, Fawad Muhammad Khan says, how AI, yes, how AI and technology will affect the medical field in upcoming years. Interesting. He wants to check. This is such a good statement, but his area of interest is very long. So actually, Fawad Muhammad Khan's area of interest is artificial intelligence and medical field. Let's see. So he has done, he's a step ahead of what I am trying to say. So that's very good, Fawad Muhammad Khan. Hassan Javed, incidence of overactive bladder among childbearing women, another very incidence. So that's very important statement. So his area of interest is actually overactive bladder, and he has specified in which age. Sameed Ali, apart from depression, okay, prevalence of other mental disorders in medical students, because I am convinced there is quite a few. So those, you have also justified why you are interested in this area of interest. Very nice. So you are actually uh, other than depression, mental disorders other than depression in medical students. That's your area of interest. Psychology of humans. Oh my God. Mohib Ali Hassan. Now, this Mohib, I would say that this is a very good area of interest, but humans is a very broad term, and humans, we have to narrow it down. So we'll try to figure it out, that how some statements are too narrow, too specific, some statements are very wide, very broad. Manur Fatma, signs of psychosis in adults. So adults, we have, everyone is adults. That's very interesting thing. So Manur, also, this is a good topic. So please write it down, and then we are going to do surgery of your statement, and we are going to explore, or dissection of your statement is a better word. Then we are going to explore everything. Telemedicine, Zainab Ikhlaq, specific to the point. Very nice. AI and medicine, AI and surgery. Okay, so AI and medicine, AI and surgery. How digitalization in industry 4.0 related with medical field. Okay, fine. So we close it here, the topic of interest. So see, whenever you want to start a research, or someone forces you to do research like they do in postgrad, or someone, or the college has a requisite or a requirement for a graduate. Once I had a student from St. James Cook University, Australia. She was here in Pakistan for some uh, electives, because she was a Pakistani Australian, so she was comfortable here. And she said that if you don't publish an article and you don't submit the published article to the university, you won't get the degree of undergrad. So whatever you have to, you are forced into research, you actually like research, your first step is going to be the area of interest. So your second step will be objective of the research. We are going to see that some of you had actually written your objectives. The objective, I have explained it in another slide. The objective is actually the three very important things of those objectives. So your first heading will be area of interest. This is for your own self. These are the notes which you are going to make. And this arrow here is actually leading you to the one ethical component, which is institutional review board. It's a very important board. Okay, so all of you must be aware that your colleges they have IRBs. Some people call it ethical committees.
Some people call it ethical boards. It's this one and the same thing. Mostly the colleges which are institutes, like we have Rawal Institute of Health Sciences in Islamabad, like many other institutions are there. So institutes, they name it IRB. So when you go to IRB, you have to present something. And if you are interested in that area or something, then you have great command on that. That's if the IRB approves your research, then you are allowed to go ahead. If IRB doesn't, there is some reason which you have to rectify and then reappear. It's just same like exam. Plus, whenever you take your research to a journal, you are done with everything. Remember that methodology had a reporting thing. So when you have to report it, the first thing journal will tell you, attach the IRB permission letter with you. Permission is very important. This is an ethical important most thing. There is a research clinical trial methodology. You are trying some medicines on two different groups. You have to take permission from Drug Authority of Pakistan. So this is not a proper way that you start your drug trials, give it to two different groups, and you have not ethically taken permission. In a very good society, everyone takes permission for things. So coming back to this slide, we have area of interest. So I request you all to please write down your area of interest for yourself as well. Also, we have some lots of topics here in the chat. Then we will define some objectives of your research. Objective in Urdu, they say maqasid. Why do you want to do this research? Okay, what are you going to achieve from it? If it is already discovered, there is no point of doing it. Here comes novelty. The word novel. The research should be something new, something which has not been discovered yet, something which has not been tried in your society. Maybe someone else has done it in some other part of the world. So you are doing it in your society with a clear, measurable, reproducible, and comparable objective that I'm going to, with practicing this research in my part of the world, I will achieve this. I'll come to in detail about the objective. Now, third thing is operational definition. Coming back to the chats. Okay, so I said someone. Okay, there was Aliza Afzal. I think I forgot to read it. So, lack of confidence in students. Very interesting statement. She's interesting. Her area of interest is to check that why there's lack of confidence. And Mukaddas is interested in neurology. Okay. So coming back to the confidence thing, the chat, lack of confidence in students, and she receives 1 heart and 3 likes. Very good. It's a very good topic. So your operational definitions in this topic will be confidence. Okay. What is confidence? You have to tell the people that, or define it for the readers, that by confidence you mean this. There is no, or if there is a worldwide single definition of confidence. I started this webinar with what is knowledge, and everyone had their own understanding of knowledge. Then I showed you a registered definition of knowledge which is followed all over the world. Ethically, I should have shown the reference as well, but I do have a reference for this. So lack of confidence in students. Who are the students? Undergrad, postgrad, students of metric, students of FSC, student of A levels, O levels, of first year, second year, third year, fourth year, fifth year MBBS, of D pharmacy, of D Pharm, or who are the students? So we have to, this is your statement. The statement will remain there in the top. Then you will have your objectives written at the second point, and third will be your operational definition, something which is only in your understanding. The universe understands it a different way. So my confidence level, my understanding of confidence is someone who can give a very good viva, someone who can talk to patients very nicely. That is a confidence. Someone who can perform surgeries very well. Someone who can give post-operative instructions nicely. Someone who can talk to the class nicely. Or someone who can
do extracurricular, co-curricular activities very nicely. So a person who is a great singer, he sings very, very well, but he is not confident to talk to the patients. So lack of confidence needs elaboration. So something which has a very different objective and subjective value, especially subjective value, needs to be defined in your operational definition. So everyone go back to your area of interest, the statement which you have given, then we and see that if you need to elaborate your statement, like signs of psychosis. So do we have an established definition of psychosis in adults, Manur Fatma? Who are the adults? What age group do you think comes in adults? What age group do you think are not adults? So, Manur Fatma, if you're listening, I would request you to please write, just for our learning, that in your statement, area of interest, who are the adults? Okay, I think she's not listening. She, so you people are there. 60 participants shows the stability of the session so far. We were 61 among those 60. I have two accounts, so it makes 58. So still we have stability of 58 people still listening. Okay, maybe it's the slow internet or something. That's why I disabled my video. College students, again, Manur Fatma, well done. Which college? There is no knowledge without college. So which college? Medical college. So you have to actually define it further. That's a very important point, that operational definitions should be defined at number 3. And we also have to uh, write a little detail about college and students. Who do you call a student? Even some teachers nowadays, they say that we will learn from you. We are also students like you. We are not enrolled as a students, but we are lifelong learners. We are also considered as students. So this is how the things they need to be defined, to be explained. That's how you will do the research, and that's how the body of the knowledge will be having the research in it. And the last, fourth thing is literature search. I'll try to elaborate everything today. Let's see how much can we go, how much is our capacity, but keeping the cognitive load in mind, my first 4 steps of the research are here. The fourth step will be literature search, what people have already done in it. Many a times you stop thinking on inventing something which is already invented. There is no point of reinventing the wheel if the things are already there. Okay, so maybe you don't know, but the things are already there. People have done lots and lots of work on it. Where is the novelty? Okay, maybe everyone in the world has actually lack of confidence among medical students coming from a certain ethnic background that might be has already been researched. So there's no point in that. So new brings something new, and how will we know that what people have done already is literature search. So let's elaborate each and every thing on this slide. Okay, so this guy is using, so we have lost one G. We are now 59. So one person has either lost the internet or lost the interest. So the first thing is that objective is what you intend to do. करना क्या है? आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? That is your objective. Area of interest is defined. So मैं किसी का रीड करता हूँ. ये Chale, I'm say Aliza Afzal, lack of confidence. Many people like your idea. So, lack of confidence in students. So, what is she actually trying to do, Aliza? Aliza is trying to measure the confidence levels at the moment, because maybe it's high.
and lack of confidence among students, that will be a good word. So she is trying to check where the confidence level is in the students right now, and is it lacking or not. It's simply आप किसी को blood test करवाने के लिए भेजते हैं और उसे कहते हैं कि अपना blood check कराओ. You are actually trying to see his hemoglobin. His hemoglobin is less, or it maybe is raised. His platelets are raised, or platelet count is deficient. So first you need to check what is actually the confidence currently, and you have to define confidence. And वही मैंने कहा कि for me there are too many things which I consider as confident. It must have happened with all of you. Some of your class fellows are very confident in mimicries, very confident in doing stage plays, very confident in driving maybe, and they struggle a lot when they come to in front of the patients, or maybe when the teacher asks any question to them among like 50, 100 or 200 people. So objective is what you intend. So Aliza Afzal is trying to check the confidence level. What do you want to see? It has to be something which will start with the word to. So this guy, the diagram, the picture here has a word to. It's actually an English language website. So he teaches what to use with the sentences. So to, we are going to modify this lack of confidence. Whereas Fawad Ahmed Khan right next to Aliza said how AI and technology will affect the medical field in the upcoming years. So operational definition for me here will be upcoming years, like 1 year, 2 year, 10 year, 15 year, 100 years. And medical field, another thing, operational definition for me will be medical field. We need to elaborate what do you understand by medical field? Is it medicine, surgery, pharmaceuticals? So we have to define it. Going back to Aliza's example, lack of confidence in students. So we'll modify it and we'll design the first line will be area of interest will be confidence levels in students. To analyze the lack of confidence, or to check or to find the lack of reasons of lack of confidence in students, or to just check the confidence level in among students. That will be, so your all objectives will be starting with the word to. Okay, so are you guys here? Are you listening to what I'm saying? Say something in your chat box. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That's good. I like this speed now. Aliza, are you listening? Aliza Afzal. Lack of confidence in students. Yes, Aliza is here. Afifa is here. So, okay, good. Aliza Afzal, yes, sir. I'm here. Good. So, the point is that, so we will modify, our next statement is going to be research objective. So research objective for this statement of lack of confidence in students, we will state that to check the confidence level among medical students, to identify the reasons of lack of confidence among medical students. Also, confidence lack, you can even check overconfidence. You can even check the desired confidence, whatever is required, maybe. Okay. So, second thing after that is you can start to find out, to calculate. Okay. So, to calculate the confidence there, let's change it to incidence of overactive bladder among childbearing women, Hassan Javed. So, to find out, you'll just add to find the incidence of overactive, to check the incidence, to calculate the incidence of overactive. So that thing will be your research objective. Sameed Ali, I hope I'm pronunciating it right, Sameed Ali. So apart from depression, prevalence of other mental disorders in medical students. So to identify medical disorders among
medical students other than depression. So you have to justify why you don't want to include depression in it. So other why you will justify it somehow that it's already done, it's not novel, maybe, or it's already something is there, because mental disorders, everything at the end will be linked to depression somehow. So to compare, so no one here has given okay, AI in medicine and AI in surgery. Kumail Danial, VPPCRC. That's a very good name or a designation or a organization. So you can compare AI uses in medicine and AI uses in surgery. This statement needs lots of elaboration, Kumail. So this is what you are going to tell people in your research objective. So first is your area of interest. So Kumail's area of interest was artificial intelligence. His further objective was that he wants to compare the uses maybe, or the knowledge maybe, the baseline knowledge. There is a statement CAP, KAP, knowledge, attitude, and practices. I suggest everyone to taste the flavor of research. If you haven't done any research in your life, start with CAP studies. They lie at the bottom of these are surveys actually. They lie at the bottom of the hierarchy, but I actually enjoy that I have crossed every step in my life of the research. I would never step straight away jump into a literature review or a systematic review or meta-analysis. I would cross each and every step. That is always beneficial. Plus, maybe what is the knowledge, attitude, and practice of artificial intelligence among surgeons, among medical practitioners, among basic scientists? Coming back to the slide, and after this word to, there should be an action word, because your objective should be measurable. Your objective should be, okay, Kumail Danial, Vice President. Nice. Good to know. Are the CAP studies and cross-sectional studies the same? This comes under study design, will be answered later on. This CAP cap is actually KAP cap. Okay, let me answer it there and then now. Cross-section is snapshot. What is happening right now? If let's suppose if you are sitting in a big hall and I'm talking to you in a hall, I'm teaching you, or we are discussing something, someone enters, and whatever we are doing there and then, whatever is happening, he's going to report it that. So cross-sectional studies, yes, are kind of CAP studies. Broader term is cross-sectional. CAP studies, one of them. Among the things which you are noticing it down are knowledge, CAP, knowledge, attitude, and practices. These are surveys. Now, many journals have refused to publish surveys, but I would really appreciate if someone does this as well. It's same like उर्दू में बात करते हैं, साइकिल चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, गाड़ी चलाएं, फिर जहाज चलाएं, सारे मजे पूरे करें, सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ लें, सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिसर्च भी पूरे करें. So handling all the technical things, sir. Transmitting you. Oh, I'm live on YouTube. Nice. Thank you very much, Kumail. And you, many of you people, I've never met any one of you, but it's very nice. Good effort. So कैप से बाहर वापस आते हैं, वो एक एक्स्ट्रा बात थी. So this, so far we have done area of interest, and our research objectives should be defined. We have to write them down. Can be 2, 3, what, like more objectives will lengthen the research. So it's better that we should stick to 1 or 2 objectives and try to achieve them. So these 1 or 2 objectives should be measurable, should be reproducible, comparable, and also applicable as well for your society. You're thinking on something which is not practical in your society. You're thinking beyond something, some American research, you're trying to do that in Pakistan with no significance, although it's novel. But will you be able to apply it later on? Will someone will be able to apply it there in their practice? So that's something which you need to think. So things are objective and subjective. Here I'm going to talk about some research types as well, quantitative and qualitative as well. In simple words, quantitative is counting. Qualitative is actually beyond counting.
It's very much objective and subjective thing. This guy who can see the oranges, he says these are oranges, or he can count the oranges. The other person says, I love oranges. So his interpretation is very different. Okay, so someone, it's like qualitative is, today we have right now 56 people. This is quantitative. I've counted that 56 people are attending this webinar. The qualitative thing will be, among the 56 people, I will go and ask each and every person some questions. How was it? Have you understood something? What you actually wanted, have you achieved that? Can you suggest something for improvement? Was it time consuming? So all those things which are actually related to the quality are qualitative researchers. Problem is that, can we ask each and every 56, this is a very small number by the way, but 56 people, even 56 people, to ask each and every person some question is very, very difficult. And especially when you are asking the question, you need to also, the better way is that you need to meet the person, also see his facial expressions, his gestures, his all those moods. That's a very important thing to do. That makes you superior. Okay. So qualitative researches are actually different and quantitative are different, but we will study them later on. Similarly, you ask the person, how do you feel after the surgery? Like if someone has actually asked you people as a student that, how after this lecture, like any lecture in the medical college, how do you feel? Do you think it was lengthy? Do you think it was too colorful? Do you think it was irrelevant? So we have to think on those lines as well. So research objectives, I'll give you an example of some research objectives here. Objective of a research should have an objective word which should have some meaning for everyone. Let's suppose there are two types of dressings. Okay, we have a dressing here and we have a dressing here. Dressing itself needs to be elaborated. Dressing itself needs to be defined. It needs to be calculated. What is dressing A? For me, dressing A might be something else. For the other people, dressing B. So this comes in operational definition as what is confidence. From who said that? Okay, we have something in the chat. Let's see. Outdated. What's outdated? Kumail Daniel. Medical lectures are outdated, sir. Okay. Yeah, maybe that's your observation. That's something which, so how to improve it, how to regain the quality of quality lectures. So this can be, or maybe there, to your understanding, to in your colleges, maybe it is outdated, but some people in different colleges have a different methodology, some interesting way of teaching, and that's a lecture and that's a modified one. Okay, so operational definitions are very important. So we need to see, we need to compare A versus we have to define them to compare. Let's see, there is a statement like to compare. So our objectives are clear here, to compare the results of silk suture. So I hope you, most of you people are understand the word sutures. Sutures are tanke, the silk suture which we use on skin, and we can also use staples. Staples are a very useful thing. And in the patients having neck dissection is something which we do to remove the tumors or cancer in the neck. So we open it up, we give a big incision. So we make two groups, and in these two groups, we can compare these two silk sutures with staples. But what are we comparing? The results. So maybe the results are dependent on lots of things. Like the patient is already diabetic. The patient selection was wrong. So the silk suture was fine, everything was fine, but the patients selected were not proper. Like one patient had comorbids, he was diabetic, he had bleeding disorders, and the area was different. He was on the lower limb and he started moving very early. So all these things should be addressed.
and the staples, maybe some different people have done, like 30 people in one silk suture group and 30 patients in the staples group. But these 30, you have to make sure in these comparisons that the same person is doing the sutures all the time. The same person is in same frame of mind. Same person is standing in the same environment. Maybe he has done a suture in a very busy minor OT of a very big government hospital, and he was so stressed. The person who has the injury was of gunshot wound, and lots of people, his relatives, were standing outside very angry. So things, these research things have to be counted a lot. So many things have to be kept in mind. So I've told you about dressing A and B. Like, I've given some statements here. What is the standard of anemia in Pakistan? Maybe operational definitions, we have to define the things. Maybe anemia is different, considered different in some areas which are high hilly areas. In those areas, anemia's definition may be different. Maybe in some uh, areas, the anemia definition in some areas is different. Maybe vitamin D sufficient amount of vitamin D in patients in Australia is different. We have to check, and we have to come with one defined definition, which is proper definition. Second is, what is stable income in Pakistan? Okay, so check that effect of stable income among doctors, among the progress of doctors, among CPD, continuing professional development activities. How does the stable income affect that? Do you think that every doctor goes abroad and does anything other than his FCPS, like he's doing FRCS, more degrees, he keeps on adding, or he does more? Has it anything to do with his stable income? Maybe he's not very stable. He has so many things to do, spend money other areas. So stable income is not a proper definition. We need to define stable income. So that comes under an operational definition. Uh, Reasonable hospital stay is very interesting. So what do you think? Staying in a hospital for one day is uh, something reasonable, or 10 days? Or many people think that staying in more and more in hospital will give you better health, better observation. Some patients, we keep them for 1 week. Some patients, we operate in a daycare setting. They come in the morning and they can leave anytime. So such statements should be avoided in your research, and such statements should be elaborated in your operational definitions. So taking medicine, burden of study. So these are some ideas which I came across, and I wrote them just to give you an idea that area of interest and your operational definition is something different. So have you seen this season? Please write in your chat and write the name of this doctor here. The character, actually. Sean Murphy, Afifa says Sean Murphy, Fawad Muhammad, Sean Mutfi, Nabiha. Yeah, it's a spelling mistake. Okay. So Sean Murphy has some problem, some illness. Can you write the name of that problem? Dr. Sean Minahil. Autism. So he's autistic. And okay, thank you everyone. Nice to see your active chat response. Haven't seen the show. Sameed Ali, please do watch it. It's very interesting. Okay, so Sameer is legend. Sameed, are you Sameer, or Sameer, are you Sameed? Or Sameed, are you Sameer? So what is a legend actually? Okay. So this statement, Sameer is a legend, or Sameed is a legend, itself needs an operational definition. How do you define the how do you define a legend? So same, my question, same for this slide, a good doctor. Who do you think a good doctor? What are the characteristics of a good doctor? So you all might be a doctor right now. You might be practicing somewhere. You will become a doctor. So write down characteristics of a good doctor. Diagnosis only. Mohib Ali Hassan. So you think that a person who can diagnose only
should be a good diagnostician, good communication skills. These are all like it's a sum of all these things. Someone who has excellent communication skills has poor surgical skills, poor medical skills is not beneficial. One of the trait is excellent Hassan Javed, patient oriented. Okay, very nice, Nabia, good thinking, good diagnosis. Mohib Ali, you have already said that. Nice, yes, he should be able to diagnose the disease. Empathetic, pathetic or empathic? Very interesting word. So empathy, yes, empathy. It's such an critical thinker, amazing. So he should be critically think on many things. There is no good doctor. Fawad Ahmed Khan says that there is no. You're so disappointed from the world, Fawad Ahmed Khan. I don't think so. There are so many good doctors here. You will be a good doctor. I hope so. So diagnostic skills. I think Fawad says here that the good doctor can't be defined. Maybe. Diagnostic skills again good. Knows how to react according to different situations. Yes. Communication skills, patience, researcher. Ah, research की बात आ गई. Researcher भी तो होना चाहिए ना. Management ये Aisha Noor, well done researcher. Management with empathy. Okay, good. Dr. Amara, but he should manage the patient with empathy. A learner. Yeah. ये तो डॉक्टर में भी हो और बाकी लोगों में भी हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग, मस्ट हैव इंट्यूशन, has a control over his nerves in emergency states. Refined skill, background knowledge, communication skill, yes. Diagnostics, very nice, beautiful things are coming. So these are all ideas. A good doctor should have quality of 7 star. Maybe this is a fancy word, maybe 7 star. I think it comes from the hotel and industry. 5 star, 7 star, yes. 7 stars or maybe 8 stars or something. But there's all of these things are there. So people are these are all, you cannot define a good doctor. If you are doing a research, you have to such words. Good doctor or any such words should be clearly defined in your research. These come under the operational definition. So who's a good medical student, by the way? So we are all looking for, we have 69 participants, guys. Good that people are coming. A good student, लिखें जी आप, a good medical student क्या होता है? जो फर्स्ट आए वो मेडिकल स्टूडेंट अच्छा है. जो कभी ना फेल हुआ हो, जो फेल होके अगली दफा बाउंस बैक करे बहुत जबरदस्त तरीके से, वो अच्छा स्टूडेंट है. जो रोज पंक्चुअल आता है वो अच्छा स्टूडेंट है. डेडिकेटेड स्टूडेंट भी हो सकता है. वन दैट डजंट स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर्स. अब ये देखें, स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स दो चीजों पे डिपेंडेंट है. वो रात को नींद पूरी करके नहीं आया, लेक्चर वाज वेरी गुड बट ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज स्लीप. वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस रिसर्च, वेरिएबल्स का इस्तेमाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे. Learner, motivated, dedicated. Very nice, Hassan Javed. I like your idea and the beautiful smile you have used the emoji. ये बड़ा important है that the student sleeps during the lecture, but the lecture, maybe it's boring, maybe the lecture is very interesting, maybe audio video issues हैं, maybe he has some medical illness himself, and lastly maybe the teacher is actually sleep inducer. A medical student is responsible for his profession. Okay. So yes, that's a good idea. So see, जो डॉक्टर नजीब का क्रैक आप यूज कर सके, क्रैक एप्लीकेशन आई थिंक. हाँ, डॉक्टर नजीब बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी नजीब की. इवन आई हैव taken some lectures from him live. I've seen him live and he has done a wonderful job over the years. Has sense of responsibility, makes who learns a chapter in a way that it would help me save someone's life. Okay, yes. So see, good, there are so many attributes, so many things one can see according to your needs. Aisha Noor की perception different है. और अब ये जो डॉक्टर नजीब की बात किसने की थी? कुमेल ने. His needs are very different. He actually wants to crack the application use for
कर सके। अच्छा वो रोमन है, आई थॉट स्काई लिखा हुआ है। सो दिस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी रिसर्च, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपकी नीड हो, जो मेजरेबल हो, जो आप अप्लाई कर सकें। आप अननेसेसरी रिसर्च पे रिसर्च ना करते जाएं, एंड यू शुड बी, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। एंड दिस इज जो सेंड अप से पहले सिलेबस कवर कर सके, बस जो पास हो जाए पता ही नहीं चले कि कैसे पास हो। And your definitions keep on modifying. Another important thing, your definitions according to your needs, they keep on changing and changing. Like your needs in final year MBBS will be very different. ठीक है, जो मेरे वार्ड राउंड्स कवर कर ले वो अच्छा स्टूडेंट है। जो अच्छा स्टूडेंट है जो कि नाइट ड्यूटीज कर ले, जो मेरी प्रॉक्सी लगा दे, किसी ने ये नहीं लिखा, अच्छा स्टूडेंट वो है। क्योंकि ये तो हम ये भी चीजें करते हैं ना, सोचते हैं। सो 70 जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So we have 70 people now. Let's go ahead. Let's search the words from the objective. Okay, so our objectives were जो प्रॉक्सी ना पकड़ा दे वो भी अच्छा स्टूडेंट है, नाइस। सो दीज आर ऑल गुड ह्यूमन बीइंग्स, गुड स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। नाउ हमें कैसे पता चलेगा दुनिया पे इस पे काम नहीं हुआ? कमिंग बैक टू अलीजा's टॉपिक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने एक अच्छा टॉपिक पकड़ लिया। कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी नो? आप अपने सीनियर से जाके पूछेंगे, हॉस्टल में या कहीं पर भी आप पूछेंगे कि क्या हमारे पुराने सीनियर्स ऐसे ही कॉन्फिडेंट होते थे? हमेशा आपने देखा होगा नेक्स्ट जनरेशन कहती है अब वो बात नहीं रही। टीचर हमेशा कहते हैं ये वो स्टूडेंट नहीं, हम तो बड़े ताबेदार थे, बड़े ओबीडिएंट थे, हमने कभी छुट्टी नहीं की थी, हमने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था, ऑल दैट। सो हाउ विल वी नो दैट व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू चेक? दुनिया की ऑब्जर्वेशन इस पे क्या है? आइडियाज दें। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा सबका आज टॉपिक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। हाउ विल वी नो that this topic has already been covered in Pakistan, outside Pakistan, in Asia, in the world, or no one has ever thought of it? जी, in the chat, आप कोई टॉपिक, मेडिकल टॉपिक कैसे सर्च करते हैं? आप एनास्टोमोसिस कैसे चेक करेंगे, सर्च करेंगे? आज आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ओके, सर्चिंग इन द डेटाबेसेस। तो फैल बहुत तेज आदमी है, तो फैल। रिजवान टीके सेज गूगल, गुड। उस पर मजीद पढ़ेंगे। ओके, सो समवन कुमेल सेज दैट आई विल गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी बुक्स ऑन इट। वेरी नाइस, आई लाइक इट, दिस इज अनदर अप्रोच। बट रियलिटी में हम यही करते हैं, वी ऑल ऑफ अस टेक आउट आवर मोबाइल्स एंड हम रिसर्च करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वी टेक आउट आवर मोबाइल्स एंड वी गो फॉर गूगल। एंड इट्स अ प्रॉपर वर्ड, गूगल कर लो उसे, इट्स अ वर्ड, ये गूगल करके देख लो। सो गूगल का इतना म्यार बन गया है, वी विल सी प्रीवियस रिसर्चेस ऑन इट। यस मुकद्दस लारेब, यू आर वेरी राइट। हाउ विल यू सी प्रीवियस रिसर्चेस? आप प्रीवियस रिसर्च तलाश कहां से करेंगी? वेयर आर द प्रीवियस रिसर्च लाइंग? कहां पढ़ेंगी ये रिसर्च? पॉजिटिव यूज ऑफ गूगल, रिजवान टी के, इंटरेस्टिंग। पॉजिटिव यूज, व्हाट इज पॉजिटिव यूज? अनदर ऑपरेशनल डेफिनेशन। मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव है शायद आपके हिसाब से वो नेगेटिव हो। Now Kumail Daniel, Vice President PR something says that Scopus, excellent। अब बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं इस पे बात करता हूँ। गूगल हर चीज की सर्च के लिए यूज हो सकता है, हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस एंड मेडिकल रिसर्च। ओके, so how will we use the medical science and medical research? This guy is actually has two paths. This is the fourth step of research. First path this guy will take is that he will go to medical databases. Many people of you have used these words. याद रख लें, PubMed is the best of the best source. जिन्होंने यूज नहीं किया, go to
your Internet Explorer or Firefox or whatever you are using, type PubMed there and start using it. जब पहली दफा आप एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करते हैं, यू हैव डिफिकल्टीज. सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी द डेटाबेस, इसका नाम है डेटाबेस, यू सी द डैशबोर्ड ऑफ दिस डेटाबेस, देन यू विल बी अ लिटिल सरप्राइज, बट दिस इज वेरी फ्रेंडली डेटाबेस. दुनिया का सबसे टॉप डेटाबेस है पबमेड, नंबर वन सोर्स फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिसर्च. So PubMed, my favorite will be PubMed. Everyone in the world, I think they all like PubMed. So you'll go and type confidence level among medical students in medical colleges. Okay. So PubMed पे आप सर्च करेंगे. Now these are your keywords. और कल आप जब आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो आपके आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट होता है, खुलासा शुरू में लिखा होता है. कोई बुक बाय करे ना मार्केट से, तो मार्केट से जो बुक बाय करते हैं उसके शुरू में और आखिर में बुक के कवर के बैक साइड पे उसका कुछ थोड़ा सा एक खुलासा लिखा होता है. जैसे आपको फिल्में भी आजकल दिखाते हैं, उसमें वो ट्रेलर दिखाते हैं मूवीज का, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या है वो, फिर आप माइंड मेकिंग करते हैं. इसी तरह की वर्ड्स खुलासा होता है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट होता है कि इस पूरे 6 सफ़ों के पेपर में क्या है, उसके नीचे लिखे होते हैं कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर हैशटैग्स. आप लोग बड़े जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, बड़ा अच्छा वो पता होगा उनको, व्हाट आर हैशटैग्स. सो एक्चुअली एल्गोरिदम के साथ वो जुड़ते हैं. Our hashtag will be lack of confidence. So we will use confidence, and lack of confidence से पहले हम confidence among medical students लिखेंगे और ढेर सारे आर्टिकल आ जाएंगे. फिर हम उसे नैरो डाउन करेंगे. अब we need to see the how to raise the confidence and how the confidence, to measure the confidence, how to decrease even the confidence, or how to analyze the confidence. So हमें उसको narrow down करना है. My first source here, follow my cursor, will be PubMed. My second source will be Mbase. अच्छा, ये 1 मिनट, मैंने ये लाइन क्रिएट कर दी है. आई थिंक इसको मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ. चले, एनीवेज, दिस कर्सर, दिस em base, ये this one. So you can use this. PubMed इसमें शामिल है, comprehensive collection of biomedical research, but PubMed बहुत से country, it's free, it's easily available, and this is the best source. You can give a good example of PubMed. Cochrane Library, ये ज्यादातर सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए. सिस्टमैटिक रिव्यू हायरार्की में सेकंड लास्ट नंबर पे आते हैं. जो हायरार्की ऑफ रिसर्च है, ये एस्टैब्लिश रिसर्च के डिफरेंट कंपैरिजंस होते हैं. ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज टॉक है, लेकिन एक्चुअली हर बंदे को ये नहीं चाहिए होते. सो आवर फर्स्ट मेन थिंग विल बी PubMed. PubMed में जाके इफ द आर्टिकल्स आर डाउनलोडेबल, सो डाउनलोड देम, मेक अ फोल्डर एंड डाउनलोड वट एवर द वर्ल्ड हैज डन ऑन इट. ठीक है. उसको ज्यादातर जो जर्नल्स आपसे कल मांगेंगे वो कहेंगे वेयर इज द लोकल, पाकिस्तानी जर्नल है, पाकिस्तानी रिसर्च है, पूछेगा पाकिस्तान में इस पे कुछ काम हुआ है, पाकिस्तान. और आर्टिकल मोस्टली इफ इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल रेफरेंस तो वो आपके 5 साल से पुराने नहीं होने चाहिए. पबमेड पे लिटरेचर सर्च पे प्रॉपर डिस्कशन हो सकती है. मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप सब लोग अभी ये कर लें कि पबमेड की वेबसाइट पर जाके, या मोबाइल से अगर सेपरेटली पढ़े हुए हैं तो उस पर अभी जाके पबमेड लिखें और उस पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मेडिकल स्टूडेंट्स पे देखें कि कितनी सर्च आती है. अच्छा, कुछ और देखते हैं जी. कुछ और चीजें ये है हमारे पास, ये इस तरफ आ जाए. सर्च इंजन, गूगल स्कॉलर, नॉट गूगल डायरेक्टली. गूगल स्कॉलर्स का काम है इज फ्रीली एसेसिबल वेब सर्च इंजन. गूगल स्कॉलर के ऊपर आप जाकर सर्च कर सकते हैं. आप जैसे मुझे एग्जांपल ले लें, मेरा नाम लिखेंगे पूरा, मोहम्मद जीशान बेग, ओरल सर्जरी के नाम से, तो गूगल स्कॉलर मेरा जितना वर्क है वो सामने दिखा देगा. आपका अपना जो वर्क है वो खुद ब खुद दिखा देगा, बट द पर्सन हैज टू गो एंड अपलोड देम हिमसेल्फ. मैंने अगर इस साल 2024 में जो आर्टिकल लिखे, इफ आई हैव नॉट पब्लिश्ड आई हैव पब्लिश्ड देम बट आई हैव नॉट अपलोडेड देम ऑन गूगल स्कॉलर, सो चांसेस आर दैट इट्स नॉट गोइंग टू एंटर देम. किसी और मेरे को ऑथर ने कर दिए तो आ जाएंगे. इसी तरह रिसर्च गेट है. रिसर्च गेट इज अ प्लेटफॉर्म. ये एक आपको मौका देता है, एक स्ट्रक्चर बना के देता है.
platform for scientists, clinicians, students, and other researchers. So आपने list बनानी है that I went on PubMed and PubMed gave me 54 articles on lack of confidence or whatever your research is. I went on Embase, then I got like 24. Cochrane, I went there and systematic reviews. There were no systematic reviews on it. So Cochrane for you might be useless for certain topics. Then comes hierarchy में research, database पहले आता है, search engines बाद में आते हैं. Google, I went to Google Scholar and Google Scholar gave me like 500 researches. इस पे researches बहुत narrow down नहीं हुई होती. रिसर्च गेट पे गया तो उस पे ऑथर की डिटेल आई, रिसर्च गेट पे उसके इंटरेस्ट है. अब रिसर्च गेट आपको क्वेश्चन पूछने की भी इजाजत देता है, कम्युनिकेट करने की इजाजत देता है विद अदर रिसर्चर्स. आप आज अपना एक क्वेश्चन आस्क आस्क का क्वेश्चन में जाके रिसर्च गेट पे क्वेश्चन लिखें. ये गूगल स्कॉलर आपको ये ऑप्शन नहीं देता, पबमेड ये ऑप्शन नहीं देता. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के रिसर्चर्स आपको रिसर्च गेट पर क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. इवन मैं कुछ वर्कशॉप्स करवाता हूँ, वर्कशॉप्स की पब्लिकेशन वो फ्लायर्स में वहाँ पब्लिश करता हूँ, लोग उसे रिकमेंड करते हैं. academia.edu थोड़ा पेड है, इट्स फ्री बट यू हैव टू रजिस्टर टू डाउनलोड इट. ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है. लेटर ऑन आप समझेंगे कि क्यों कोई आर्टिकल डॉलर्स में पे करके ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्यों कोई आर्टिकल ओपन एक्सेस होता है. इनके अपने बेनिफिट्स हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज टॉक. ऑलरेडी वी 1.5 hour हो गया. जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू रिमूव दिस सर्कल जो आई हैव क्रिएटेड एक्सीडेंटली. ओके, सो ये मैं आपको बता चुका हूँ. इससे आगे चलते हैं. ओके, सो अगर किसी ने देख लिया है तो बता दे. लेकिन ये है कि one essential component of research. So far we have done area of interest, we have done research objective, how to write a research objective, how to start writing research objective, कैसा होना चाहिए, measurable होना चाहिए, comparable होना चाहिए, reproducible होना चाहिए, operational definition बता दी कि क्या होती है. अगर यहाँ तक भी आप आज कर लें बैठ के तो it's something which is good enough. उसके बाद हमने लिटरेचर सर्च की बात कर ली, दुनिया क्या कर चुकी है इस पे. दुनिया में रिसर्चर्स आ गई हैं. लिटरेचर सर्च में बड़ी बड़ी चीजें हैं. गूगल स्कॉलर पे इवन लोगों ने लिखा होता है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस. तो इसके बाद अगला आ गया कि रिसर्च में एक असेंशियल कंपोनेंट है. तो एक असेंशियल कंपोनेंट का नाम लिखते हैं चैट बॉक्स में. ओके, कुमेल सेज रिसर्च क्वेश्चन इज एन असेंशियल कंपोनेंट. वेरी नाइस. वी हैव 61. एकदम हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रेट कम हो गया. हाइपोथेसिस, वेरी नाइस. रेफरेंसेस, अमेजिंग. सी एवरीवन इज. हमदा आफ्ताब ने हाइपोथेसिस कहा है. मिनाहिल बिनते तारिक ने कहा है रेफरेंस. माहीन जुबैर सेज कंट्रोल. अमारा बट सेज रिसर्च गैप. And Nabiha Sheikh says methodology. These are all the steps. I think methodology is one of the step. It is an essential component. Fine. Research topic is an essential component. Topic ही नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे. बात भी सही है. रिजवान टीके लिटरेचर रिव्यू. अलीजा लिटरेचर रिव्यू. समीद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. ऑल अच्छा ये नया नाम है. अतीक SZMC/LC. SZMC is a medical college, Sheikh Zayed Medical College. Okay, yeah. So good जी. रिसर्च टॉपिक itself is very essential. टॉपिक ही नहीं होगा तो आगे कैसे जाएंगे. वाह ठीक है. NC means local council. Okay, local council. पॉपुलेशन रेफरेंस. चलें जी. मोहम्मद उस्मान, थैंक यू. आपका शायद पहली दफा मैसेज आया. आयशा नूर, नीड फॉर रिसर्च, ऑपरेशनल डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू. मोहम्मद आदिल. चलें हम मैं बता देता हूँ. साइटेशंस बड़ी मजे का बात की कुमैल ने. साइटेशंस क्या है इस पे बात करेंगे. वेरिएबल्स, शायद आपने वेरिएबल्स की मेरी ये स्लाइड पहले देख ली होगी क्योंकि वो बाय चांस आ गई. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. कुछ जो आपने बातें की हैं दे आर स्टेप्स ऑफ रिसर्च. कुछ जो चीजें यहाँ लिखी हैं वो
इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, ये हर स्टडी में फिट हो जाते हैं, चाहे पॉपुलेशन का ताल्लुक हो या ना हो, चाहे कंपैरिजन हो कि ना हो, वेरिएबल हर चीज में, और वेरिएबल निकालना, आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। बस ये मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इस वेरिएबल्स के बाद हम क्लोज अप कर दें, ताकि बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड ना हो। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, ठीक है, कितने बंदे थे, आज कितने लोग हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्ट मुकद्दस लारेब इज सेंडिंग, इज इट अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई स्लाइड्स? मुकद्दस लारेब, what is that? Yes, okay. I have identified the screenshots. ये शायद वो स्लाइड है जो आपने कहा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और वो स्किप कर दी जल्दी, तो आपने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, गुड। चलें आगे चलते हैं। सो वेरिएबल की बात ये है कि वेरिएबल एक क्वांटिटी है जो इंडिविजुअल्स में वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल हाइट, फॉर एग्जाम्पल एज, एक ग्रुप के लोगों में मे बी अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल हो, समझ बूझ वेरिएबल हो, एक प्रॉपर्टी दैट टेकन ऑन डिफरेंट वैल्यूज, इट्स अ करेक्टर दैट कंटेन्स डिफरेंट वैल्यूज। सो वेरिएबल्स की बड़ी मजे मजे की डेफिनेशंस है। द थिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी विच यू कैन कंट्रोल, ये लफ्ज याद रखें, कंट्रोल इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल किए जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं किए जाते, कुछ मैयर किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं। Then comes calculate the effect of one thing over the other, और relationship। एक वेरिएबल एक ग्रुप में है, एक वेरिएबल एक और ग्रुप में है। हम एक लेक्चर देते हैं एक ग्रुप को यूजिंग दिस ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, ठीक है। अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे के नाम लें, एक दूसरे को समझे। यू कांट सी मी, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस तो आप देख नहीं सकते। सो माय एनवायरनमेंट टोटली इज चेंज्ड इफ आई एम देयर इन a face-to-face environment. How learning has different has increased or decreased. Change one thing and see the change on the other. These are variables. Example, for example, job satisfaction, क्या फैक्टर्स हैं जिनको इंक्रीज करने से एक एम्प्लॉय में जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा आती है? फॉर एग्जाम्पल सैलरी। डज, अब हम स्टेटमेंट बताएंगे, हाउ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सैलरी अफेक्ट्स द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ an employee of a private medical college, how the increments in the salary appreciation certificates they affect, तो सैलरी इंक्रीज करें, सैलरी डिक्रीज करें, एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन। सो अभी वो कौन से वेरिएबल्स हैं, हम ये बात नहीं कर रहे। इन्फ्लेशन आजकल बहुत जिक्र होता है, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डॉक्टर। एक डॉक्टर है बेचारा, तनख्वाह में काम करता है, वो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी अच्छी बनाएगा, उससे पब्लिश करे, उसको उसकी वो करेगा, पब्लिसिटी करेगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, उसको अपग्रेड करेगा। वो सर्जिकल स्कैल्पल से लेजर पे कैसे आएगा इन्फ्लेशन में, या आ रहा है, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस? ये दो वेरिएबल्स हैं। एथनिक ग्रुप्स पे आप डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एथनिक ग्रुप रिलेटेड बात हो सकती है कि एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर सर्टेन ड्रग का क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्रीम्स डर्मा का सर्टेन एथनिक ग्रुप पे क्या इफेक्ट हो सकता है। सो नेम जैसे सजेस्ट करता है, वेरिएबल्स वैल्यूज कैन हैव चेंजेस, ठीक है। मैंने हमारी एक अपनी एक वो स्टडी है, उसके बात है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक स्कोर ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम बिटवीन स्टूडेंट्स हु हैव डन एफएससी एंड स्टूडेंट्स हु हैव डन ए लेवल्स। ये दुनिया में बहुत से लोगों ने वैसे की हुई है। पीपल इन वन मेडिकल कॉलेज 54 रह गए, हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो हम लोग एक ही मेडिकल कॉलेज में आ गए, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सारे लोग एक ही क्लास में आ गए। सारे लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने ए लेवल्स किया हुआ है, कुछ लोगों ने एफएससी की हुई है। जब फर्स्ट प्रॉफ का स्कोर आया तो पता चला कि किसी का स्कोर बेटर आया, किसी का स्कोर नहीं आया। क्या इससे फर्क पड़ता है कि व्हाट इज देयर एकेडमिक बैकग्राउंड फ्रॉम विच दे आर कमिंग? एकेडमिक स्कोर इज अ वेरिएबल,
विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज। अब हम बात करेंगे कि हमने टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक, अब डिफरेंट आइडियाज मैंने आपको दे दी। कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस अमंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ये जो हम जिस पे बात कर रहे हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे वो इंडिपेंडेंट है, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, मिसालों से आगे बताता हूं। और इसका आउटकम दूसरों पर डिपेंड करता है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये दोनों में एक ही लिखा गया। ये दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जी, और ये भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, ये हिडन होते हैं। इसकी मिसाल अभी बात करते हैं इससे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट पे इन्फ्लुएंस करता है। एक चीज है इंडिपेंडेंट है, उसकी मर्जी है, वो ज्यादा हो कम हो, वो ही उसी की वजह से चीज हो रही है। तो जो डिपेंडेंट है उस पर इसका असर होगा। स्टेटमेंट, मशहूर स्टेटमेंट है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। हार्ड किया जा सकता है, सक्सेस डिपेंडेंट है इस हार्ड वर्क पे। ठीक है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं मैं तो सारी रात पढ़ता हूँ फिर भी पास नहीं हुआ, मैं तो सारा साल पढ़ता हूँ फिर भी पास नहीं हुआ। ठीक है। तो दिस नीड्स टू बी डिफाइंड। बट यहां पर आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आपकी स्टेटमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एक ड्रग देने से हेडेक ठीक हो रहा है, ड्रग ज्यादा देने से जल्दी ठीक हो रहा है। एक ड्रग देने से या अनीमिया में प्रेगनेंसी हो रही है, या प्रेगनेंसी में एनीमिया हो रहा है। एनीमिया में प्रेगनेंसी तो नहीं होती, प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है। सी दिस इज हाउ। सो क्या, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, क्या चीज ज्यादा करने से, क्या चीज कम करने से क्या फर्क पड़ता है। बड़ी मजे की मिसाल है। फादर गिव्स पॉकेट मनी टू द किड्स, दैट इज इफ यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अंडर, you might be still receiving pocket money from from your parents. So in this picture the father gives pocket money टू द किड्स। आप चैट में लिखें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा पहले निकाला करें। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सॉरी। वेरी नाइस, आप सब लोगों ने, नहीं, फादर गिव्स पॉकेट मनी, यस, ये तो स्टेटमेंट है, सब लोगों ने ठीक कहा। इंडिपेंडेंट इज फादर। ठीक है, फादर इज इंडिपेंडेंट बिकॉज ही डज नॉट नीड द किड टू गिव हिम मनी, बट द किड इज डिपेंडेंट बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आई होप सो। लेकिन देखें बात यह है, अब पॉकेट मनी ज्यादा कम की जा सकती है। यस, ये जो फवाद है, मोहम्मद खान ने बात की कि द फादर, चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फादर। सो इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान जैसे आईएमएफ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पैसे देने वाला। डिपेंडेंट कौन सा है, जिसको पैसे मिल रहे हैं। अब आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ड्रग देने वाला, डिजीज, डिजीज इज डिपेंडेंट ऑन द ड्रग, ड्रग कम या ज्यादा की। टीका, टीका कम या ज्यादा कर दिया। ठीक है। पढ़ाई, अगर एक बंदा सो रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट आगे खैर आता है। सो हर स्टेटमेंट में एक वेरिएबल निकालना है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। ये एक और कुछ एग्जांपल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पहले निकलते हैं, वो डिपेंडेंट पे अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस लीड्स टू हेल्थ डिटोरिएशन, स्ट्रेस बढ़ाओगे कम करोगे हेल्थ बेहतर होगी, ये इस पर अफेक्ट कर रहा है। ओपननेस इंक्रीजेस क्रिएटिविटी, ये उसी तरह की कॉन्फिडेंस लेवल की ही बात है एक किस्म की, कुछ और भी हो सकता है। ऐसे जहां पर बिल्कुल ओपननेस की, अब अगेन ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी, क्या ओपननेस क्या होती है। खुला मैदान हो आपके इलाके में, स्कूल में, कॉलेज में, पहाड़ी इलाके में आप रहते हो, मौसम अच्छा हो, बाहर जाने की सहूलतें हो, या डिस्कशन करने की सहूलतें हो, तो फिर वो क्रिएटिविटी बढ़ती है। व्हाट इज दैट। लेकिन दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस, इट क्रिएटिविटी इज डिपेंडेंट ऑन इट। एक्सट्रावर्जन इंक्रीजेस सोशल एक्सेप्टेंस, पेरेंटल इंटेलिजेंस लीड्स टू चाइल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी रिसर्च में जानने के लिए। सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन हम बात कर चुके हैं। इंक्रीज करें सैलरी, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या इंक्रीज होती है या फिर भी नहीं होती? मे बी हमें हमें तो लगता है, हम इंक्रीज करके देख लेते हैं, मे बी ना होती हो। व्हाट आर यू चेंजिंग? सैलरी, द चेंज विल अफेक्ट व्हाट? जॉब सेटिस्फेक्शन। वही फादर की पॉकेट मनी देने वाली मिसाल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्सेस डिपेंडेंट पे बात करते हैं। वेरिएबल द रिसर्चर चेंजेस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। आप अगर पौधा लगाते हैं, आप उसमें पानी आपके इख्तियार में है, फादर के इख्तियार में पॉकेट मनी है, आप उसे चेंज करते हैं, फर्टिलाइजर दें ना दें, उसकी क्वालिटी, उसका फर्टिलाइजर की टाइप्स, वो आपके इख्तियार में है। और वेरिएबल अफेक्टेड बाय द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे फर्क क्या पड़ेगा? पॉकेट मनी वाली बात, प्लांट ग्रोथ, पॉकेट मनी बढ़ाओ, मे बी वो अच्छी अच्छी चीजें बाय करना शुरू कर दे, मे बी वो 4 किताबें खरीदना शुरू कर दे। नंबर ऑफ लीव्स, मे बी नंबर ऑफ लीव्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट, डू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स? काइंडली elaborate. ओपन ये और भी हैं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये अपना काम कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, और बीच में कुछ और आ जाता है, वो आगे दो और हैं। यस, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं तो। ये भी वही है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात है। और एक ये खैर हम लेटर ऑन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंपॉर्टेंट मोस्ट बात यह है कि रिसर्चर इसे मैनिपुलेट कर सकता है और उससे कम या ज्यादा होना देख सकता है। ठीक है, दो ड्रग्स से आराम आ जाता है सर दर्द में, डज इट अफेक्ट द हेडेक? और 3 से आता है। ठीक है, कोई एज ग्रुप इस पे अफेक्ट होता है खास, या कोई जेंडर खास अफेक्ट होता है? दैट इज हाउ इंडिपेंडेंट एंड dependent works. In a study on the effect of a new drug, the independent variable would be drug dose. पहले आप 50 mg ड्रग देते थे, नई मार्केट में ड्रग आई, उसने कहा मैं इतनी एफिकेसी आपको 25 mg में देता हूँ, कम कर देता हूँ डोज, डोज ज्यादा नहीं करता। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? दैट आर मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड टू असेस द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, हेडेक कम हुआ या नहीं हुआ, दैट इज डिपेंडेंट। सो यू हैव टू एक्चुअली, दीज आर लिंक्ड। 51 रह गए। अब शायद मुकद्दस लारेब ने जो क्वेश्चन पूछा शायद वो इसमें एड्रेस हो। एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा, फालतू। आई ऑलवेज चेक माई क्रेडिट कार्ड बिल्स फॉर एक्सट्रेनियस चार्जेस। ये मिसाल है इंग्लिश लिटरेचर से, वर्ड वहां से आया है। कोई छुपे हुए हिडन, कोई सीक्रेट चार्जेस तो नहीं लगा रहे। इसी तरह एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? हिडन वेरिएबल है। आप अच्छा भला काम करें, समझ नहीं आ रही यार बात, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ चक्कर है। एनी सच वेरिएबल विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड वी आर नॉट स्टडिंग इट, हमने उसको एड्रेस ही नहीं किया, जहन में नहीं आया, नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इट, हम उस अपनी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में उसको कर ही नहीं रहे। बट इट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, इट डज नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मजे की बात यह है, इंडिपेंडेंट ड्रग दिए जा रहे हैं, हेडेक ठीक नहीं हो रहा, कोई चीज है, कोई एक्स्ट्रा चीज है जिसको हमने जहन में नहीं लाया, एड्रेस नहीं किया अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हुए। बट रिसर्चर चेंजेस इंडिपेंडेंट, वन नॉट डिपेंडेंट। इससे पहले हम ये लाइन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिसिन दी, पेशेंट का हेडेक ही नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, आपने मेडिसिन दी और पेशेंट मेडिसिन टाइम पे ले नहीं रहा। जैसे वो स्लीप की बात हो रही थी, लेक्चर आपको सुला देते हैं तो स्टूडेंट वो घर से ही नींद पूरी करके नहीं आता, लेक्चर तो अच्छा है, उसके घर में बड़े मसले चल रहे हैं एक्सट्रेनियस। इन चीजों को एड्रेस करते हुए आप एक्चुअली अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिजाइन करते हैं। ये आगे एक्सप्लेन हो जाएगा बहुत अच्छा। कंट्रोल करना है आपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर कंट्रोल करना है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और फिर कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। टॉक बहुत लंबी हो रही है, आई कैन फील दैट। स्लीप डिप्रीविएशन ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, देखें आगे किसी ने लिखा था, मैंने ऑलरेडी इसकी स्लाइड बनाई हुई थी। व्हाट, बताएं व्हाट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस स्टडी? बताएं जी, चैट में लिखें। जागते रहो भाई वीकेंड पे,
एफर्ट करके आ रहे हो, नहीं तो बाहर फिर रहे होते अभी। ऑनलाइन लर्निंग का फायदा ये है कि मे बी अभी आप बाहर ही हो कहीं पे। एनवायरमेंट डिपेंडेंट, स्लीप इज इंडिपेंडेंट। यस, लेट्स सी। स्लीप डिप्रिविएशन इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, Deprivation. स्लीप कम ज्यादा तो हो सकती है। Right. 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 ओके, सो डिपेंडेंट वेरिएबल बता दें फिर। स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब बात आ गई कि जब हमने स्टडी शुरू कर दी, सब कुछ हो गया, तो हमें पता चला कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ स्लीप पे डिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं होता कि नींद पूरी करो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। तो कई और बातें हो सकती हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ब्रॉड चीज है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल ही नहीं किया था आपने स्टडी में। नाउ कैन यू टेल द वेरिएबल्स विच कैन अफेक्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस जनरली? सोचें। मैंने लिख दिया वैसे नीचे, शायद उसकी नजर ही कमजोर हो। सोशल मीडिया, सारी रात बैठे, वो स्लीप डिप्राइव्ड का रीजन सोशल मीडिया है। स्लीप इज मस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी। अलीजा, मैं इस पे कमेंट दे दूं। एक फेमस सेइंग है, नींद को मत रोको वरना वो तुम्हें रोक देगी। स्लीप पूरी करें, लेकिन स्टूडेंट परफॉर्मेंस सिर्फ नींदें पूरी करने से हो जाती है? हॉस्टल लाइफ रूटीन अमेजिंग हसन, जबरदस्त। ठीक है, घर से पढ़ के आना, वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जल्दी सो जाता है, उठ जाता है। हॉस्टल वाले सोने नहीं देते। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस बैड, बाज दफा बहुत अच्छी स्टूडेंट परफॉर्मेंस होती है। ग्रुप, घर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट। लॉस ऑफ फैमिली मेंबर वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल स्ट्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब नींद भी पूरी हो रही है, लेकिन कोई फैमिली में कोई क्राइसिस हो गया। Quality of lecture delivered, yes, maybe student performance की one factor हो सकता है। Yes, you are right. Quality of teaching, को करिकुलर एक्टिविटीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। आखिरी वेरिएबल की बात करते हैं, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल पढ़ने के बाद ये समझ आता है, ये उसी की एक टाइप है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जिसको कंट्रोल करना, एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है रिसर्चेज में। बाद में याद आएगा कि भाई ओहो, वेरिएबल्स तो मैंने आइडेंटिफाई किए सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और मैंने एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग को एड्रेस ही नहीं किया। इट इज एसोसिएटेड बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, ये मजे की बात आ गई। स्लीप के साथ भी ये लिंक है और स्टूडेंट परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक है। अदर वेरिएबल्स कैन हैव इफेक्ट ऑन बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, चले हम ये स्लाइड आगे पीछे होगी। कंफाउंडिंग की ये है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, ये दोनों को एड्रेस कर रहा है। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बीच में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं। इट इज एसोसिएटेड, ये वही स्लाइड थी, वो स्लाइड का टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है। इट इज एसोसिएटेड विद बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज लीड्स टू वेट गेन, एक स्टेटमेंट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वेट गेन। इफेक्ट ऑफ exercise leads to weight gain. Other variables can have effect on both independent and dependent. Weight gain एज से रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सरसाइज एज से रिलेटेड भी हो सकती है। हेल्थ, हाइट एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हो सकती है, वेट गेन से भी हो सकती है। जेंडर, मेटाबॉलिक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए कंफाउंड, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। When all the confounding variables are taken care of, then this is then it's added in inclusion and exclusion criteria. आपने बैठ के अपनी स्टडी का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाना है, एंड यू हैव टू एक्चुअली एड्रेस ऑल द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंक्लूजन बनाते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया एक तो हो गया मेडिकल स्टूडेंट्स। नंबर टू हो गया कि जो फर्स्ट आता है क्या उसे मैं शामिल करूं इसमें, जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, उसे शामिल करूं इसमें, या वो जो बेचारा सप्लियों से का शिकार है। सो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल प्रॉपरली एड्रेस्ड है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टेकन केयर ऑफ
द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, अगर आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया प्रॉपरली एड्रेस्ड है। आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड। स्टडी गेट्स एक्सेप्टेड। अच्छा, आप क्या करते हैं कि आप बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, स्टडी रिफ्यूज हो जाती है। आईआरबी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। वीक ऑर्गेनाइजेशंस में हर बंदा आईआरबी में शामिल होता है। जो स्ट्रॉन्ग मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आईआरबी का पार्ट होना एक बड़ा ऑनर होता है, और आईआरबी में बड़े सीरियस लोग शामिल होते हैं। स्टडी आपकी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है क्योंकि आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, उनको उसको अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में एड्रेस किया। डाउट्स आपकी स्टडी में क्रिएट होते हैं, लोग समझते हैं कि इसने थॉरो स्टडी नहीं की। अगर आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को एड्रेस नहीं किया, आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आखिरी स्लाइड आई थिंक ये है, लिमिटेशंस। कल मैं एक कोलीग से बात कर रहा था कि लिमिटेशंस क्या है और डीलिमिटेशंस क्या है। देखिए, हर चीज में ना, हर स्टडी करने में कोई लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है इसमें कि क्या आप पूरे पाकिस्तान के हर मेडिकल स्टूडेंट की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैज जज कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आपको अपनी लिमिटेशन, अब ये कुदरती है, दिस इज नेचुरल, नहीं कर सकते। एक एक के पास जाके एक एक से मेक श्योर नहीं कर सकते। हम कितने हैं अभी लोग? हमें 53, क्या मैं एक एक 53 के पास जाकर आज के लेक्चर की क्वालिटी जज कर सकता हूं? नहीं। मैं कुछ 6-7 जिन्होंने चैट में पार्टिसिपेट किया उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। ये मेरी लिमिटेशन ऑफ द स्टडी है कि मैं हर एक बात बंदे को एड्रेस नहीं कर सकता। डीलिमिटेशन जो मैंने खुद लगाई है, ठीक है, मैं बंदे ही वो चूज करता हूँ जो अल्फाबेटिकली मैं कहता हूँ ए वाले बस मैं सारे चूज कर लूंगा, तो और बाकी सारे निकल जाए। तो ये लिमिटेशन को एड्रेस करना, कंफाउंडर्स कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ, दोज आर कॉल्ड लिमिटेशन। सो लिमिटेशन कंफाउंडिंग वेरिएबल से रिलेटेड है। अगर आप कंफाउंडर्स का ख्याल नहीं कर सकते तो आप उन्हें लिमिटेशंस में एड्रेस करते हैं। जो मैं प्रपोजल बनाऊंगा रिसर्च का, उसमें मैं लिखूंगा कि ये वाला मसला एक्चुअली एक लिमिटेशन है ये कंफाउंडर, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, लेकिन ये एक लिमिटेशन है। तो ये मेरी स्टडी की लिमिटेशन है। बाज दफा रिकमेंडेशंस भी आती हैं कि भाई आगे लोग बढ़ें और पूरे मुल्क में ये स्टडी करें। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है इन साहब की, ये बड़े मशहूर हैं। अ प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट दैट आस्क्स व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिश्ता है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम और इंटेरोगेटिव वो होता है जो उनके रिलेशनशिप्स को एड्रेस करे। एंड आई थिंक this is the last slide for today. First of all, related to this slide, I would like to excuse you, say sorry that I started it late, and Minahil was kind enough to accept this apology. I was busy in a surgery. An emergency accident case came and I had to manage that case. Jaw surgery ka tha. So I actually finished my work. I was working from in the morning as well, and I had finished these slides yesterday. So today I just came back from work by I think 7 or maybe, और आजकल WhatsApp का भी कोई इशू है. So first of all, sorry for starting late. Secondly, this is important for you. इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये साइटेशंस लिखी हैं, किसी ने नाम भी लिया था। साइटेशंस में क्या होता है कि साइटेशन आपका काम दुनिया में कितने लोगों ने एज अ रेफरेंस अपने आर्टिकल में लिखा है, इसका मतलब है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है कि 74 लोगों ने, आई एम ए क्लिनिशियन सो मेरी साइटेशंस रिलेटिवली कम है। बेसिक साइंटिस्ट या पब्लिक हेल्थ वालों की 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार होती हैं। तो हमें तो पेशेंट्स भी देखने पड़ते हैं और हमें और भी काम करने पड़ते हैं, तो ये है कि रिसर्च भी करनी पड़ती है। सो our citations are relatively less, but citations give you confidence. I wish and pray कि आप लोगों की citations यहाँ 2074 हो। और ये आपको आर्टिकल्स मैंने कितने लिखे, कितनी citations का ये नीचे ग्राफ शो हो रहा है। H इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है। सिर्फ इसमें मैं ये मैसेज दूंगा कि साइटेशन क्या होती है, और आप अपने आप को गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे अपनी साइटेशंस ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। ये तो that's all folks means that thank you very much, that's it, and this is my uh,
इंस्टा अकाउंट जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा तो पब्लिश नहीं कर सकते, इंस्टा अलाउ नहीं करता, लेकिन जो रीजनेबल चीज़ होती है. सो स्प्रेड गुड मैसेजेस अमंग द वर्ल्ड. I have not finished the research methodology, so my message to the organizers is that we can have multiple small relevant sessions. Small करते करते 2 घंटे हो गए. So that's it. And Hassan Javed says, thank you, sir, for such an elaborative session. We are grateful that you took time out for the session despite your busy schedule. Thank you very much for your kind words. रिसर्च ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. सो जब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो तो फिर आपको पता भी नहीं चलता 2-2.5 घंटे, लेकिन इंसान की एक लिमिट है. तो एक नेचुरल कंफाउंडिंग वेरिएबल ये है थकावट. वो हो जाती है और बंदा एंड में थक जाता है, सुनने वाला भी सुनाने वाला भी. तो अब आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि स्टार्ट डिफाइनिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आप लोग उसमें ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखें, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखें, लिटरेचर सर्च करें, और ये तो मुझे ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे कि हम नेक्स्ट इसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल, आई एम हैप्पी टू कंट्रीब्यूट. Thank you so much, sir, for your time and for the detailed session covering all the points in research methodology and हर चीज को cover करना. Also, I'm thankful to the participants as well for sticking around till this time. We will inshallah have more sessions with you in the future. Research methodology या और भी हम research के different aspects को cover कर सकते हैं. आ जाओ. Thank you once again, sir. ये मैं बंद कर, ये देखो बंद कर दूंगा. जी, most welcome. Thanks a lot. I think we should now finish the session. Yes, you all And I may hope the leave. recordings are available. Yes, sir. I will Enjoy be sharing the. yourself, people. Enjoy the weekend. Yeah. Keep And researching. Take care.